हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर नेम है होल नंबर्स। फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट द नेचुरल नंबर्स, देन वी विल कम टू द होल नंबर्स। नाउ व्हाट इज नेचुरल नंबर? जब भी आप काउंटिंग करते हो, जैसे अगर गिवन नंबर ऑफ पेन्स है तो आप काउंटिंग किस नंबर से स्टार्ट करते हो? 1 2 3 4 5 लाइक दिस ना. So you start counting from 1 and so on. So the counting numbers are known as natural numbers. तो जो भी काउंटिंग नंबर्स है, जो आप काउंट करने के लिए जिन नंबर्स का यूज़ करते हो, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड अप टू इनफाइनाइट. Those numbers are known as natural numbers. So how can you represent the natural numbers? 1 2 3 4 and so on up to infinite. Now, if someone asks you about what is the smallest natural number and what is the greatest natural number, then what will your answer? Now see, the smallest numbers are always on the left hand side. So the most left number is 1. So 1 becomes the smallest natural number. And what can you tell about the greatest natural number? Greatest numbers are always on the most right hand side. But you can see the numbers will never end. It goes up to infinite. So you can't say about what is the greatest natural number. And generally the question only asks about the smallest natural number, not about the greatest. Now let's come to the next topic. The two words are written here, predecessor and successor. Firstly, let us learn the meaning of these terms. Now, what is the meaning of pre? आपने सुना होगा pre का मतलब होता है पहले, ठीक है? Pre, predecessor. Now, let's take an example of the first number given here. What is this? It is 16. Now the question asks about what is the predecessor of 16? You know pre means पहले. तो predecessor का मतलब है कि आपको जो भी नंबर गिवन है उसके जस्ट पहले जो भी नंबर आता है वो इस नंबर का, गिवन नंबर का predecessor होता है. मीन्स जो नंबर गिवन है उसके जस्ट पहले जो नंबर होगा वो इसका predecessor होगा. Okay, now what is the predecessor of 16? It's 15, because 16 comes after 15. So 15 becomes the predecessor. Now let's learn the meaning of successor. Successor means, let's take example again of 16. Successor means कि आप गिवन नंबर में क्या ऐड करते हो जिससे आपको नेक्स्ट नंबर मिलता है, एंड दैट इज योर सक्सेसर. इफ यू ऐड 1 to the 16, what you got? You got 17. So the next number after the given number is your successor. Similarly, if you want to see mathematically about the predecessor, so predecessor is you just have to minus 1 from it. 16 minus 1 is 15. तो predecessor में आप 1 सब्सट्रैक्ट करके जो भी आंसर आता है वो आपका predecessor होता है, और गिवन नंबर में जो आप 1 ऐड करते हो जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आपका successor होता है. So I think these two terms will be clear to you. Now let's take the given example and we will calculate the predecessor and the successor of the given numbers. Now take 20. Now what is the predecessor? Let's first find out the predecessor. You just have to subtract 1 from the given number, and you know 20 minus 1 is 19. So the predecessor of 20 is 19. Now what is its successor? Successor means you have to add 1 to it. Now 20 plus 1 is 21. Now the next question is 3.
the predecessor becomes 3 minus 1, that is equals to 2. And what about the successor? 3 plus 1, and it come out to be 4. Now 2, predecessor 2 minus 1, that is 1, and successor 2 plus 1, that becomes 3. So the successor of 2 is 3 and the predecessor is 1. Now let's take the example of 1, and it will be tricky for you, maybe. Let's see. Now firstly let's calculate its successor. Now successor means add 1 to the given number. The given number is 1 and we will add 1 to it, you got 2. Now what about its predecessor? You have to subtract 1 from the given number, and 1 minus 1 is 0. Is it correct? No, it is not correct, because we are learning now about natural numbers, and 0 is not a natural number. You have seen that 1 is the smallest natural number, not 0. It means that 0 is not a natural number, so you can't tell about the predecessor of 1. You must have learned it. क्योंकि आपको 1 का predecessor, 1 जो कि एक natural number है, आप उसका predecessor नहीं find out कर सकते हो. अगर 1 एक whole number होता तब आप उसका predecessor find कर सकते हो. हम लोग आगे के topics में उसको देखेंगे. लेकिन natural number 1 has no predecessor. Okay? Now let's take the 2 example. These numbers are bigger from these given ones. So let's see. Now the number is 105 times 9. 4, 5. Now let's see about its successor. You have to just add 1 to it. So you got 9 plus 1, 10. Carry 1. 9, 1, 10. 0. 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 Carry 1. 1 plus 0 is 1 and 1. So this becomes its successor. Now let us learn about its predecessor. You just have to now subtract 1 from this number. Okay? Indeed. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Now you have to subtract 1 from it. Okay. Now minus. Here you have write 1. अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पर zeros put कर सकते हो for your simplicity. और अगर नहीं भी है तो ये understood है कि यहाँ पर 0 है. Okay, now 9 minus 1 is 8, 9 minus 0 is 9, 9, 9 and 9. 0 minus 0 is again 0 and 1 minus 0 will be 1. So you see, this is the successor. Now let's take the last example, that is 10,000. So firstly we will find out its successor. Now 10,000 plus you have to add 1 to it. The remaining gaps will be filled with 0. In the case of multiplication and division, you mean it becomes 1. We will see it when that type of question comes. Now let's come here. At the time of addition and subtraction, if there are empty places, then you have to replace 0 with it. Now you have to add this. Now 0 plus 1 is 1. 0 plus 0 is 0, 0, 0. 1 plus 0 is 1. Now this is the successor of 10,000. Now let's find out its predecessor. Now the given number is 10,000 and you have to subtract 1 from it, and we will always write the number from the right hand side. Okay, 1. Now the remaining gaps will be replaced with 0. Now अब आप देखिए जो ऊपर का नंबर है, the above number is smaller than the below number. Then what you have to do?
you will now have to take carry. देखिए ये 1, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको कैरी चाहिए, लेकिन आप बगल वाले से नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑलरेडी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ये नंबर इसको कैरी देगा। नाउ दिस नंबर बिकम्स 10, ओके, 1 0 10 एंड इट बिकम्स 0. नाउ दिस नंबर विल गिव कैरी टू दिस 0. नाउ 10 - 1 इज 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब ये नंबर जो है वो 10 बन जाएगा क्योंकि ये 1 कैरी इसको देगा, 1 0 इज 10. नाउ अब ये नंबर इस नंबर को कैरी देगा, तो इसमें से एक सब्सट्रैक्ट होगा, ये 9 बन जाएगा और जो इसके पास 10 आ जाएगा, दिस बिकम्स 10. नाउ अब ये नंबर इसे कैरी देगा, एट लास्ट इसको कैरी मिल गई है, तो ये नंबर जो है वो बन जाएगा 10 और इसमें से एक सब्सट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि इसने कैरी दिया, 10 - 1 इज 9. ओके, नाउ 10 - 1, आई होप आपको कैरी पता होगा कि अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पर अगर 5 हो और आप इधर से 1 कैरी लोगे तो वो 6 नहीं 1 5 15 में आ जाएगा. उसी तरह 0 है तो अगर आप उसका कैरी लोगे तो वो 1 नहीं होगा, 1 0 10 होगा. ओके, नाउ लेट्स डू द फाइनल कैलकुलेशन. हियर वी गॉट 10. 10 - 1 इज 9. नाउ this 9, it is of here. 9 - 0 is 9. This 9 is 9. 9 - 0 is 9. 9 - 0 is 9. 0 - 0 is 0. Final predecessor comes out to be this. Here some questions are given. From the given 3 questions you have to find out whether the given statement is true or false. So now let's move towards the first question or statement that says the predecessor of a 2-digit number is never a single digit number. तो ये क्या कह रहा है? predecessor तो आपको पता है, तो जो 2-digit नंबर का जो predecessor होता है वो कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है. सबसे पहले predecessor देखते हैं. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर 12 आपको गिवन है, उसको आपका प्रेडिसेसर अगर आपको इस नंबर का चाहिए तो आपको इसमें से 1 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एंड यू गॉट द प्रेडिसेसर ऑफ 12 दैट इज 11. नाउ आपको काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है जिसके वजह से आप इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर सको. सिर्फ आपको एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना है. तो हम एक नंबर लेते हैं 2 डिजिट नंबर ना, 2 डिजिट नंबर. तो हमने एक 2 डिजिट नंबर लिया है और हमको ये दिखाना है कि इस 2 डिजिट नंबर का जो प्रेडिसेसर है वो एक सिंगल डिजिट हो सकता है. अगर आप ये दिखा देते हो तो आप इस स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर सकते हो ना. 10 - 1 इज 9. तो देखिए ये एक 2 डिजिट नंबर है कि नहीं है, और इसका प्रेडिसेसर जब आपने निकाला तो एक ये 1 डिजिट नंबर आ रहा है. यहाँ पे क्या लिखा था कि 2 डिजिट नंबर का जो प्रेडिसेसर होता है वो नेवर कभी भी एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं हो सकता है. और हम लोग ने काउंटर एग्जाम्पल से ये फाइंड आउट किया है कि 2 डिजिट नंबर का जो प्रेडिसेसर है वो 1 डिजिट नंबर हो सकता है. ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, सो व्हाट यू गॉट द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज यू जस्ट हैव फाउंड the counter example. Now let's move towards the second question. The whole number 13 lies between 11 and 12. अभी आप whole number को भूल जाइए, बस मुझे ये बताइए क्या 11 और 12 के बीच में 13 आता है? Yes or no? The answer is no. 13 comes after 12. Okay? So this statement is wrong. आपको इसकी ये जस्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए कहा है क्योंकि देखिए चाहे 13, 11, 12 ये तो होल नंबर भी है, नेचुरल नंबर भी है. ओके, बस होल नंबर क्या है? 0 को अगर आप नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हो तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है. क्या 13 कभी भी 11 और 12 के बीच में आ सकता है? नहीं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सिंपल. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, the successor of a 2-digit number is always a 2-digit number.
तो इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई भी आपको 2 डिजिट नंबर गिवन है, इट इज कंपल्सरी, इट इज अ 2 डिजिट नंबर, अगर आप उसका सक्सेसर निकालते हो तो क्या वो हमेशा 2 डिजिट ही आएगा? Now let's find out the counter example of this statement, just like we found out the counter example of this one. Now let's see. Now let's take a example of a 2-digit number whose successor will be a 3-digit number. So it will become a counter example. Okay, now let's take a 2-digit number 99, and when you find out its successor by adding 1 to it, what you got? You got 100. Look, this is a 2-digit number and this is a 3-digit number. क्या किसी 2-digit नंबर का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट ही होगा? ऐसा कंपल्सरी तो है नहीं. हमने फाइंड आउट करा इसका 3 डिजिट नंबर है कि नहीं, 3 डिजिट का नंबर है ये इसका सक्सेसर. सो दिस स्टेटमेंट इज also false. Thank you. Hope you have learned these topics clearly and this will help you further. Thank you so much.